ऑयल पॉमेस 2 से 3 टेबलस्पून। चिकन डाल दिए इसमें। सॉल्ट डाल दिया आपने 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। वन टेबलस्पून क्रीम। कैबेज चला गया इसमें आधा कप। बस ये रेडी है। मेयोनीज 2 टेबलस्पून। केचप 2 टेबलस्पून। ये आपकी फिलिंग रेडी है। दो तरीके से ये रोल्स बनते हैं, पहले बेक कर लें और फिर उसको काट के उसकी फिलिंग कर लीजिए, या फिर अभी आप स्टफ़ करके शायद बनाएंगे। पामेस ऑलिव ऑयल, ये प्लेन वाले हो गए, इसकी बाद में फिलिंग करेंगे। ये प्लेन है। उसको अच्छी तरह बंद कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रूफिंग के लिए रखूँगा, फिर अंडे से ब्रश करके। ओके। ये फिलिंग बची हुई इसलिए है कि वो जो 4 हमारे हमने सादे बेक करेंगे उसको काट के आपको करना बताएंगे, ठीक है। बीच से इसको नहीं काटा है, जो स्टफ्ड वाले बन थे उसको सिर्फ ऊपर से एक, ये देखें, एक इसको ज़रा सा कट लगाया था। कट लगाने के बाद इसमें चीज़ भर दी। चीज़ भरने के बाद इसको 1 मिनट के लिए वापस अवन में रखा 180 पे, ताकि चीज़ मेल्ट हो गई। खोल के अंदर सैलेड लीव लगाया, उसके ऊपर वही जो फिलिंग रखी और ये रेडी है, ठीक है।